हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को, जो कल ओपन होने वाला है। बहुत पॉपुलर डिमांड थी, बहुत जगह आप लोगों ने मैसेजेस में लिखा हुआ था, एंड हेंस आई एम शेयरिंग इट। ऑल्दो आई कंसीडर माई सेल्फ नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ आईपीओ, बट स्टिल आई एम जस्ट गोइंग टू स्टडी द डेटा विद यू ऑल। एंड मेरे हिसाब से टाटा का कोई भी आईपीओ आता है हमको अप्लाई करना चाहिए, और अगर अलॉटमेंट आ जाएगा तो वेल एंड गुड। बट एनीवे, बात करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की। तो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ जो है, अगर हम इसको क्विकली देखते हैं, इज एट द डोर एंड इट्स ओपनिंग ऑन द 22 नवंबर। मतलब कल खुलने वाला है, आज 21 नवंबर है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को हम डिकोड करेंगे। तो एक्चुअली टाटा टेक्नोलॉजीज करती क्या है? Tata Technologies is a subsidiary of Tata Motor, an Indian MNC and product engineering company that provides services in engineering and design, IT service, manufacturing, and product development to the automotive and aerospace industries। मतलब इनका मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री में। अगर बात करें कंपनी कब फाउंड हुई थी, 1989 में फाउंड हुई थी, और 2005 में दे एक्वायर्ड 100% इक्विटी इन इनकैट इंटरनेशनल यूके। 2011 में they secured high funding through Alpha TC Technologies Private Limited and Tata Capital Growth Fund. 2012 they launched the Electricity Mobility EMO vehicle at the North American International Auto Show. उसके बाद 2013 में they acquired Camric Holding Incorporation, and 2017 Tata Technologies Europe and Ascenda Holdings AB. So this is how the company has acquired various small companies. And at this point of time, अगर हम देखते हैं कि ईयर 2021 में इनके क्या क्या आरओई आरओसी थी, तो आरओई थी 12%, आरओसी था 9.8%, और ईयर 2022 में बढ़ के आरओई हो गया है ऑलमोस्ट लाइक 20% एंड आरओसी हो गया है अबाउट 16.7%। सेम ईयर 23 में ये बढ़ के 23.7% हो गया, और आरओसी बढ़ के 19.5% हो गया। तो बिफोर वी टेक दिस वेरी सीरियसली, आई वांट टू टेल यू कि कभी भी अगर कंपनी को आईपीओ लॉन्च करना होता है तो ऐसा नहीं होता है कि कंपनी 1-2 दिन में डिसाइड करती है और लॉन्च करती है। कम से कम उनको एक 3 साल का होराइजन लेके चलना पड़ता है, और कंपनी को उन 2-3 साल में प्रॉफिटेबल होना पड़ता है, और उसके अलावा they have time to polish their data. I can see the similar thing out here. Maybe they have actually improved on their data, or they have polished their data. That I'm not challenging. But at the same time, ROE में लगातार ग्रोथ है, ROCE में लगातार ग्रोथ है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें, so what I am understanding कि जो रेवेन्यू है ना, that cannot be manipulated, because revenue is generated by selling the articles that you have, right? तो इन्होंने 2020 में जनरेट किया था 2852 करोड़, 21 में इन्होंने 2380 किया था, मतलब 500 करोड़ थोड़ा नीचे गया था। उसके बाद 22 में 3500 करोड़ एंड 23 में 4400 करोड़। तो except March 21 where there was a decline in the revenue, 22 and 23 में revenue increase हुआ है। Profit after tax have been pretty good. There is a linear growth that you can see it over here, except in the year 21. Profit after tax margins भी अगर हम देखते हैं तो improve हो रहे हैं धीरे धीरे, और debt to equity ratio जो है वो भी थोड़ा better हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स, सो इन्वेस्टर्स इसमें जो है टाटा मोटर्स जो है, टाटा मोटर्स का शेयर है 4.62 करोड़, एंड वैल्यू कुछ है इसकी 2314 करोड़। उसके बाद एटीएचपी का है 0.97 करोड़ शेयर्स, एंड इनका वैल्यू है कुछ 486 करोड़। उसके बाद टाटा कैपिटल ग्रोथ का है 0.49 करोड़ शेयर्स, एंड इनका वैल्यू है 243 करोड़। अब अगर हम आईपीओ डिटेल्स की बात करते हैं, तो आईपीओ ऑफ टाटा टेक्नोलॉजीज हैज बीन सेट एट अ प्राइस बैंड ऑफ 475 to 500 rupees at a face value of 2 rupees. At the upper band, the company is expected to raise about 3042 crores with valuation of 20,283 crores. Moreover, the company has reserved 20.8 lakh shares for its employees and 10%, that is 60.85 lakh shares, for the shareholders of Tata Motors.
अगर हम बात करें, देखो कोई भी अगर आईपीओ आने वाला होता है तो उसका जो हमें इनिशियली जो उसके बारे में थोड़ा बहुत इंडिकेशन होता है वो पता लगता है ग्रे मार्केट से। ग्रे मार्केट में लास्ट 2-3 दिन में आप देखो तो थोड़ा टर्बुलेंस है, जैसे मंडे ट्यूसडे देयर हैव बीन सम टर्बुलेंस, बट दिस स्टॉक प्राइस is stable. It is opening at a premium tomorrow and it is stable. So the Tata Tech IPO is seeing grey market premium of about 59%, roughly about 298 rupees, with investors willing to pay 700 to 800 for the same. बेसिकली बात यही समझ में आ रही है कि इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को पसंद कर रहे हैं और उनको ये स्टॉक फ्यूचरिस्टिक लगता है। Before I close about this stock, I would like to show you the company's website. This is the company's website. If you go and see what are the products that they are having, we help automakers design, engineer, and validate products of a greener, safer, and more sustainable world. Let's engineer the vehicle of the future. And उसके बाद आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल हेवी मशीनरी में इनका काम है, प्लस दे आर इनटू द एरोस्पेस। ये इनके 3 मेजर पार्ट्स हैं। और किस जगह क्या क्या करते हैं, ये बेसिकली ये डिजाइनिंग करते हैं फॉर अ बेटर वर्ल्ड, एंड देन उसके बाद ये लोग डिजिटल एंटरप्राइज मतलब री इमेजिंग डिजिटल जर्नीज। वी हेल्प आवर कस्टमर्स सॉल्व इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स with our next generation digital solutions. By employing the latest technologies, we improve best fit solution that delivers better. So ये कंपनी जहां तक मुझे समझ में आती है कि ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, इसका आगे आगे और application of the products will keep on increasing as new products will come in the market. उसके बाद इनका जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स है, सॉफ्टवेयर टू इनेबल बेटर प्रोडक्ट्स। वी हेल्प आवर कस्टमर्स ट्रांसफॉर्म देयर प्रोडक्ट्स थ्रू आवर सर्विस ऑफरिंग। We also help them identify and deploy product development software offered by our partners and manufacturers service and realize better. I also want to show you about the gray market report, Tata Technologies IPO. The initial offering of the Tata Technologies Limited is going to hit the Indian market on 22nd November. And what it says that Tata Technologies IPO date of subscription will remain open till 24th November, till Friday this week. The Tata Group company has fixed the price band at rupees 475 to 500. As I told you, what people are expecting, that this may open at about 700 rupees. Okay, so according to the market observers, Tata Technologies IPO grey market premium is rupees 351. मतलब अगर 500 रुपए इसका बेस प्राइस है तो ये कहीं 850 रुपए के आसपास जाके खुलेगा। एंड ये जो 350 रुपए का 351 रुपीज का प्रीमियम है, दिस इज अनचेंज्ड इवन व्हेन द मार्केट्स आर टर्बुलेंट। This means Tata Technologies IPO in the grey market price has remained steady despite choppy trends on Dalal Street. The event to add the Tata Technologies IPO GMP has more or less remained steady in the last 3 days. So definitely the stock is going to open on a premium. You should definitely apply for it, and it's going to come in a lot of 30. So in case you get it, I think it'll be a good opportunity, and I all personally believe if the management is honest, sincere, and dedicated towards their work, the product will be good. They will not goof up, they will not cheat, they will not manipulate their balance sheets. So I definitely want to apply for this IPO, and let's see how it goes. And according to me, the company looks good. There has been consistent growth in ROC, ROE. Revenue is growing, PAT is growing, so there is growth, means there are good perspective for it to grow in future as well. So with this, I'll be signing off. Hope it solved all your queries, and I would say that you go for it. All right, take care. Bye bye. See you in the next video, and do join me for live trading every single day from 10 to 11.